on education emergency from access to quality. We are very proud to have luminaries in our education world, from our education world. Ms. Bela Jamil is the moderator of this session. She has recently received the Asia Education Medal for 2024 by T4 Education and is also the CEO of Idara-e Talimo Agahi. She's also the founder of Children's and Teachers Literature Festival. She's also a great advocate for the Asar Foundation and is involved with children and female education. Welcome, Ms. Bela Jamil. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदेद आपको 10th इस्लामाबाद लिटरेचर फेस्टिवल पे जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस एक पायनियर है which has been doing this amazing festivals, जिन्होंने हमको भी चस्का लगा दिया फेस्टिवल्स का, ख़ुसूसी तौर पे बच्चों के लिए और टीचर्स के लिए भी. आज का जो टॉपिक है वो सब उसके बारे में वाकिफ़ हैं, बल्कि बहुत सारे लोग उससे रुस्वा भी हैं कि एजुकेशन इमरजेंसी कितनी दफ़ा नाफिज हुई है, क्या इस बार लोग सीरियस होंगे भी या नहीं. मगर आज की मेरी खुशकिस्मती ये है कि वी हैव विद अस सम टॉप नॉच people who understand what really it all means, but more importantly are also doing something about it. So I think without much ado, I would like to introduce our honorable panelists over here, and it is really indeed a tremendous honor कि हमारे साथ मोहिउद्दीन अहमद वानी साहब हैं. And just to let you know कि ये नहीं बात है कि मिनिस्टर एजुकेशन पंजाब नहीं आए, वो जो हालात हैं इस वक्त क्लाइमेट चेंज और पोल्यूशन के और स्मॉग के, इसकी वजह से the motorway was shut, so therefore he could not come. But he is yet another activist. मोहिउद्दीन अहमद वानी साहब जो आजकल हमारे फेडरल सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन प्रोफेशनल ट्रेनिंग के, is indeed a distinguished civil servant, and with more than 22 years of experience, he brings to us an activism which I rarely see, and I've seen many a secretary and federal secretary, वो इस वक्त आके तो वो बिल्कुल फाइल को हल्के से हल्का कर देते हैं, काम को हल्के से हल्का कर देते हैं. This is the reverse. We see a federal secretary who's become so active that now his day begins, I don't know at what time, but he's in a school every day at about 7:30 in the morning, and we keep hearing what is happening, what is his latest peeve, and what he's trying to do to turn around the education systems. With a BSc in Electrical Engineering from UET, Lahore, and LLM from Warwick, UK, and a Master's in Development Studies from the Institute of Social Studies, The Hague, he is really putting all his learning to use. And of course, the practice that he has gained over the past couple of decades and more. So of course, he's from the Pakistan Administrative Services, and after passing the Civil Superior Services examination, he has been holding many, many posts, and I will not go too many, but certainly I also saw him in many posts, but especially when he was the Chief Secretary of Gilgit-Baltistan for a short period, but managed to achieve much from April 22 to October 2022. He served as Special Secretary of the Ministry of Federal Education and Professional Training, and he was also earlier the Director General of the National Rahmatul Alameen Authority and CEO of the National Endowment Scholarships for Talent, and also Chairman of the NFC Engineering Institute, Faisalabad. But I think we'll see as he speaks all that he has accumulated over the years and how he is putting that to use. We have with us, of course, Dr. Shahid Siddiqui, a prolific writer, somebody who keeps on his toes, all of us on our toes, by early morning. इनको आमद होती है सारी रात शायद या सारा दिन भी, और जो कुछ भी है वो लिख देते हैं और हम सबके नज़र हो जाता है इनके सफ़रनामे, इनके आइडियाज़, and writing from things like folk music to ode to parents, to things like amazing personalities, including Gulzar Sahab
and he loves Potohar. So he's a real Potohar, what should I say, aficionado. And he had done his M.Ed from the University of Toronto, Canada, TESOL from the University of Manchester, UK, and postdoc research at Oxford University. Has worked in academic and administrative positions of some of the most prestigious universities such as AKU, LUMS, GIKI, and NUML, and of course been the Vice Chancellor of Allama Iqbal Open University. Currently, he is serving as the Dean, Faculty of Social Sciences, Media Studies, Art and Design at Lahore School of Economics. His recent books, or some of his books, include The Rethinking Education in Pakistan, Perception, Practices and Possibilities, Education, Inequalities and Freedom, A Socio-Political Critique, Language, Gender and Power, The Politics of Representation and Hegemony in South Asia, Education Policies in Pakistan, Projections, Politics, Projections and Practices, Aadhe Adhure Khab, Vagara. He puts us all to shame. Great to have you with us. and of course, last but not least, Arshad Saeed Hussain Saab, this current MD of the Oxford University Press, again a very fine leader, and I heard him yesterday taking up big positions on challenges such as what's happening in Gaza, what is happening all over the world, and trying to, including climate change. And every time the Literature Festival takes place, कोई बहुत अच्छी themes जो है वो उनको आगे लेकर बढ़ते हैं. But he's a leading publisher, trendsetter, and OUP has done great service to humankind in Pakistan and indeed all over the world, but also the latest work which is on teacher education, continuous professional development, and coming up with new solutions of AI and technology, etc. So great to have you with us. I have 3 questions, and the first round really is all about how are we defining the emergency? एक तो एक constant हमारे पास आते हैं figures, पहले हमें 3 million आया, फिर हमारे पास अभी 25 million है. But really, I would like to begin with Wani Saab first as to how are we defining the education emergency? Is it only about access, कि बच्चों की रसाई नहीं है, or is it something beyond that? And I just want a very fast definition round, so maybe 2 minutes of that. Okay. No, on the action part, I will ask Wani Saab. So my second round of questions will be on, okay, what are we doing about it? And I hope we can then show Wani Saab's presentation. And I think there'll be a lot to absorb. But let's try and talk about how we're defining it. And for the audience also to say, क्या ये education emergency सिर्फ रसाई के बारे में है, or is it something beyond? So, Wani Saab first, and then to Shahid Saab, and then to Arshad Saab. Shukriya बहुत madam. I would like to explain the whole education emergency in 2 minutes. जब पाकिस्तान बना और अब तक 72 सालों में हमने 4 की एरियाज़ में चूँकि वो काम नहीं किया एजुकेशन में, जिसकी वजह से आज हमें एमरजेंसी, जैसे आपको हार्ट की कोई एलिमेंट होती है तो वो अचानक नहीं होती, उसके पीछे डेकेड्स की जो इग्नोरेंस होती है, डिफरेंस होती है डिफरेंट एस्पेक्ट्स में, डाइट में, लैक ऑफ एक्सरसाइज और सारा कुछ. तो एजुकेशन में भी ये हुआ. हमें ज़रूरत थी 4 चीज़ों की. वी शुड हैव एक्सपेंडेड आवर एग्जिस्टिंग एजुकेशन इंस्टीट्यूशन. हमने एक्सपैंड उस तरीके से नहीं किए जिस तरीके से हमारी पॉपुलेशन एक्सपैंड कर गई. सेकेंडली, एलिमेंट ऑफ एक्विटी, वो भी हम इंट्रोड्यूस नहीं कर सके 72 सालों में, ताकि जो एलीट लोग पढ़ते थे उनके लिए ज़्यादा मौके थे, और जो गरीब लोग और मार्जिनलाइज लोग पढ़ते थे रिमोट एरियाज़ में, उनको हम एक्विटी के उस चैप्टर के अंदर नहीं इनकॉर्पोरेट कर सके. तीसरा था एक्सेलेंस. एक्सेलेंस में वी टोटली रैन आउट, वी लैग बिहाइंड. हम इंडिया में IITs बनते गए, उनके नेहरू ने खुद बैठ के बनाए, हम नहीं बना सके. ये तीसरा था फैक्टर जिसकी वजह से आज हमें ये दिन देखने पड़े हैं. और चौथा था एम्प्लॉयबिलिटी. हमने अपने एजुकेशन में जो जितने भी हमने चीज़ें इंट्रोड्यूस की फ्रॉम K to 12 एंड अंडर ग्रेड एंड पोस्ट ग्रेड, हमने ये बिल्कुल नहीं देखा कि मार्केट में उसकी एम्प्लॉयबिलिटी कितनी होगी और उसका जॉब प्रोस्पेक्ट्स पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में क्या होंगे. ये 4 चीज़ें हमने मिस कर दी और आज के दिन देखने पड़े हैं एमरजेंसी के. ये जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन बच्चे हैं, ये नहीं इसकी रीज़न कि ये नहीं पढ़ रहे. वजह यह है कि इनको पता है कि इस पढ़ाई से हमारा
कैरियर नहीं बनेगा। तो इकोनॉमिक रीजंस भी इसके साथ कनेक्टेड हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जिसने कंट्रीब्यूट किया नेशनल लेवल पे एक्नॉलेजमेंट का। ये एक्नॉलेजमेंट ऑफ डिफीट है, लेकिन इसी से हमने आगे बढ़ना है कि एमरजेंसी का मतलब ये है कि हमने एक्नॉलेज कर लिया है कि हमने 72 साल काम उस तरीके से नहीं किया करना है, और आगे क्या करना है उसका भी एक रोड मैप बना दिया है कि तमाम प्रोविंसेस, फेडरेशन, मल्टीलैटरल पार्टनर्स, प्राइवेट सेक्टर, नॉन प्रॉफिट सेक्टर, दे विल हैव टू वर्क टुगेदर टू एड्रेस दिस इमरजेंसी। कोई दवाई आपको अस्पताल के अंदर से मिलेगी, कोई आपको मार्केट से मिलेगी, कोई ऑपरेशन इन हाउस अच्छा होगा, कोई बाहर से होगा। यू हैव टू अडॉप्ट ऑल दोज मेथडोलॉजीज विच कैन एड्रेस दिस इशू ऑफ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन। जो आपने कहा एक्सेस का भी इशू है, एक्सेलेंस का भी इशू है, इक्विटी का भी इशू है, लर्निंग पॉवर्टी का भी इशू है। जो पढ़ रहे हैं वो उसको फ़ायदा भी है कि नहीं। तो ये सारा होलसम एक पिक्चर है। तो वी नीड टू हैव अ 360 डिग्रीज अप्रोच टू एड्रेस दिस एलिमेंट ऑफ एजुकेशन इमरजेंसी इन पाकिस्तान। थैंक यू वेरी मच। आई थिंक ये कितना अच्छा खुलासा है कि एक हमारे पास एक सिस्टम है जो कि इवॉल्व कर रहा है 47 से, जो हमको काम करना चाहिए था ऑन ब्रॉडनिंग द एजुकेशन सिस्टम राइट अक्रॉस फ्रॉम प्री प्राइमरी टू टर्शरी लेवल, वो हमने काम नहीं किया। और जैसे वानी साहब ने कहा कि इशू सिर्फ रसाई का नहीं है, इक्विटी का भी है कि हम मार्जिनलाइजेशन को एड्रेस कर रहे हैं या नहीं कर रहे, क्वालिटी से हम की मुराद क्या है, और क्योंकि अगर क्वालिटी नहीं होगी तो हमारी रसाई भी सस्टेनेबल नहीं होगी। और फाइनली एम्प्लॉयबिलिटी ऑन दिस डे, इन दिस डे एंड एज, क्योंकि अगर एम्प्लॉयबिलिटी नहीं है तो एजुकेशन का क्या फ़ायदा। मगर सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि सिर्फ एक के करने का काम नहीं है, इट नीड्स पार्टनरशिप्स। तो ओवर टू यू डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी, हाउ डू यू लुक एट द डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन इमरजेंसी? Thank you, Bella. I think we need to seriously look at some of the data provided by the, this is taken from official documents. And then we can talk about the level of emergency we need here in Pakistan. According to this latest report by Pakistan Institute of Education, we have 26.09 million students, children outside school. This is a huge number. Second important thing is that those who reach school, 38% of them drop out by the time they reach grade 8. This is another huge number. And the literacy rate is still 62.8%. And if these are the questions, if these are the challenges, I think we needed to have a very different kind of approach to deal with these challenges. Because this 62.8% literacy rate is below the literacy rate of India, Sri Lanka, Bangladesh, Nepal, and even Bhutan. So that shows the seriousness of problem. But on the other hand, the allocation for education in Pakistan, in 1997, it was 3.2%. And in 2007 policy, we promised that it is going to be 4% and then 7%. And instead of going up, because the needs are growing, the current allocation, which is reported in Economic Survey of Pakistan and a report by Pakistan Institute of Education, Financing Public Sector Education, it has come down to 1.5% of GDP. I think that is something which should disturb us, and which should, think that the kind of emergency we need. I'll end this, my part, that these kind of promises we see in all the education policies, that the acknowledgement is there in all the education policies, that we'll be doing this, we'll be doing this, but when it comes to implementation, we don't see any political will. So I think if somebody asks me what is the biggest problem in education in Pakistan, it is lack of political will, and it is not confined to one government. I think my study shows me that throughout we have not given priority to education, and the time has come now to stand up and to confront with this problem
with all seriousness. Thank you. Shukriya bahut bahut Dr. Shahid Siddiqui. Again, the issue of lack of sustained political will and lack of resources to education and allocations. Instead of going up, they are going down, and that is indeed tragic. But before I go on, please may I request the volunteers over there who are actually making quite a bit of noise. Volunteers and others, may I just request you कि थोड़ा सा अपनी आवाज़ कम करें, because echo काफ़ी हो रही है यहाँ पे. Thank you. So on to Arshad Saeed Hussain Sahab, how do you see the defining features of the education emergencies, and very rapidly, and so that we can go on to actions. तो आई थिंक वानी साहब ने और शाहिद साहब ने बड़ा एलोक्वेंटली एजुकेशन इमरजेंसी को डिफाइन किया है. एक और एस्पेक्ट मैं ऐड करना चाहूँगा, एंड दैट इज़ रेलेवेंस ऑफ एजुकेशन, एंड दैट हैज़ टू डू विथ व्हाट्स हैपनिंग ग्लोबली. ये कल भी मैंने अपनी इनॉग्रेशन में इस पे बात की थी, and that is the fundamental change that we are witnessing across the world with generative AI. So artificial intelligence has brought about a drastic change in how people are going to learn, how they are going to acquire knowledge and assimilate it. तो इसको जब हम education emergency declare कर रहे हैं, so I think we need to incorporate what's happening worldwide into it. So rather than just focusing on content, we now need to look at and establish lifelong skills of learning amongst our children, and skills of how to learn, skills and we also need to teach children around mental resilience, communication skills, कॉन्फिडेंस एंड अपस्किलिंग. क्योंकि दुनिया में अब जिस पेस से टेक्नोलॉजी बदल रही है, तो द बिगेस्ट थिंग दैट वी कैन टीच आवर चिल्ड्रन इज हाउ टू लर्न, अनलर्न एंड रीलर्न. सो आई थिंक दैट इज एन एलिमेंट दैट वी शुड add to the education emergency while we are developing curriculum and while we are developing content as educators, as publishers into our textbooks. बहुत बहुत शुक्रिया, and I think we've got a very well-rounded sense of what defines the education emergency, including relevance, upskilling, life skills, AI, all those relevant skills which are so essential, ताकि एक ज़िंदगी गुजारने की महारतें, बल्कि पूरा एक लाइफ लॉन्ग जो एक पैटर्न है of educating yourself and learning and relearning, वो भी आप उससे मुलव्वस हो सकें. और I think this is one of the most important part. My second round is really about, okay, we've also heard this too many times, what are we doing about it? And I think we are so fortunate today to be hearing from Wani Saab in this round again. He'll be the first one. But most importantly, Wani Saab, आप ये तो कहेंगे, the largest elephant in the room is population. We have 251 million people just now. माशाल्लाह से 7 million population हर साल add हो रही है. Pipeline choked है. हम कैसे करेंगे? That's a big elephant. Population के बारे में कोई बात नहीं करता. मगर most importantly, जो हमारी scale है districts की, हर एक district अगर पंजाब ही ले ले तो वो बहुत सारी मुल्कों से बड़ा है. Imagine Wani Saab had this opportunity of working in the Islamabad Capital Territory, earlier in Gilgit-Baltistan as well. Magar jab size does matter and decentralization or localized action does matter. Let's hear from Wani Saab, and he has a presentation to share with us what he was able to do. So over to Wani Saab, and to hear from him first, and then also to look at what he's been able to do. Thank you very much. Basically जो presentation है वो भी इसलिए लाया हूँ कि कमिटमेंट, स्लोगन सब कुछ होते हैं, लेकिन जब तक आप ग्राउंड पे डिलीवरी पे काम ना करें, कोई मानता नहीं है. दूसरी बात है कि हमें ज़्यादा ओवर थिंक भी नहीं करना चाहिए. दुनिया भर में बेस्ट सोल्यूशंस मौजूद हैं, जस्ट अडॉप्ट देम, अप्लाई देम एंड मूव ऑन. तो मैंने यही किया. पहले मैं गिलगित बल्तिस्तान में 2 साल रहा, तकरीबन 20 महीने. आई रोल्ड आउट सर्टन प्रोग्राम्स देयर. उस पर मैंने जब थोड़ी कामयाबी देखी तो इस्लामाबाद में आके उनको स्केल अप किया, और मैं बाकी सूबों के साथ भी उनको शेयर कर रहा हूँ. तो आई विल शो कि मेरा प्रायोरिटी एरियाज़ क्या थे. अच्छा, अब ये देखें, ये इस्लामाबाद है.
सरकारी स्कूल प्राइमरी स्कूल आपके 200 हैं, 65,000 बच्चों को दोपहर 11 बजे खाना फ्री मिलता है, स्कूल मील्स प्रोग्राम. So until and unless you invest in the nutrition of kids जो कि 48% stunted हैं, आप उनसे एक्सपेक्ट ना करें लर्निंग. इस्लामाबाद के 40 से 48% बच्चे सुबह नाश्ता करके नहीं आते, उनका वजन कम है, उनकी हाइट कम है. तो वी हैव स्टार्टेड फॉर द लास्ट मैनी मंथ्स 100% स्कूल मील्स प्रोग्राम फॉर इस्लामाबाद पब्लिक स्कूल्स. तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका डाटा आ रहा है कि बच्चों का हाइट भी इंप्रूव हो रही है, वेट भी इंप्रूव हो रहा है, और हमने पूरा उसका कंपैरिजन किया है. ये सेंट्रलाइज किचन, नेक्स्ट स्लाइड पे जाएं. ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड पे जाएं. नाउ दिस इज एन आउटस्टैंडिंग. आप देखें, एक सेकंड पीछे स्लाइड पे, पीछे ये किचन है, स्टीम कुकिंग है. 8 o'clock सुबह ये खाना 20 पर्पस बिल्ड वैन्स में डिलीवर होता है जाके 9:30 बजे स्कूलों में, और 11:30 बजे बच्चे खाना खाने शुरू हो जाते हैं. रिजल्ट्स क्या निकले हैं? 25% एनरोलमेंट बढ़ गई है, 95% पे चली गई है, ड्रॉप आउट्स कम हो गए हैं. बच्चों को ये भी अलाउड है, हम 10% खाना स्कूल में ज़्यादा भेजते हैं, तो वो बच्चे घर से लंच बॉक्सेस लाते हैं, अपने बहन भाइयों के लिए भी आते हैं. तो आपने जब तक कोर इशू ऑफ न्यूट्रिशन, एजुकेशन और लर्निंग एड्रेस नहीं कर सकेंगे. ये आप देखिए, मैंने स्कूलों के सेंटर्स में ये वॉश स्टेशंस लगा दिए हैं ताकि कम्युनिकेबल डिजीज से बचने के लिए बच्चों को ये आदत डाली जाए कि गुजरते फिरते खेलते क्लास से निकलते वो अपना हाथ धोते जाएं. अच्छा, ये भी इम्पैक्ट होगा बच्चों की हेल्थ पे, इसका हम 6 महीने बाद डाटा आपको बताएंगे. नेक्स्ट, ये हमने फ्री आई स्क्रीनिंग शुरू कर दी है स्कूल में. हेल्थ काम नहीं कर रहा. ये जिस स्कूल में स्कूल मील्स होगा वहाँ फ्री आई स्क्रीनिंग होगी. जब फ्री आई स्क्रीनिंग होगी तो पता ये चला कि 20 से 22% बच्चे शॉर्ट साइटेड है, उनको सामने बोर्ड ही नज़र नहीं आता, और आप टीचर उनको कौन जहन कहते थे, वालिद उनको डांटता था. तो अब हमने उनको फ्री क्लासेस देनी शुरू कर दी हैं सो दैट दे कैन रीड द ब्लैक बोर्ड और वाइट बोर्ड. नेक्स्ट, 100 नहीं, अब 125 स्कूलों में मैंने बेसिक हेल्थ डिस्पेंसरीज बना दी हैं जहां पे बेसिक मेडिसिन सारी हैं, डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट सारा है. कईयों में स्टाफ नर्सेज हमने डिप्लॉय कर दी हैं, और कईयों में स्टाफ को मैंने मेडिकल कॉलेजेस से और दूसरे मेडिकल ट्रेनिंग से ट्रेन कर दिया है कि बेसिक ट्रायाज कर सके. और बच्चों के हमने वालदा और उनके बहन भाइयों को भी अलाउ कर दिया है कि आके किसी किस्म की मेडिकल फैसिलिटी लेना चाहें लें. बच्चों के लिए हाइजीन किट्स भी रख दी हैं, और उनके लिए फोलिक एसिड्स के सप्लीमेंट्स भी दे दिए हैं ताकि बच्चों को जो एनीमिक हैं वो उससे बेनिफिट ले सकें. अच्छा, दूसरी बात है, अगेन ये प्राइवेट सेक्टर हमारे सरकार से आगे निकल जाता था अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में. हमने 100 स्कूलों में एक स्टेट ऑफ द आर्ट अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन फैसिलिटी इस्टेब्लिश कर दी हैं, और इसकी जो HR थी वो पर रेगुलर हमने थर्ड पार्टी से हायरिंग करके 100 टीचर्स एंड 100 टीचिंग असिस्टेंट्स डिप्लॉय कर दी है. द किड्स आर सो हैप्पी. हमारे पास अब जगह नहीं है, वी हैव टू एक्सपैंड इट इन नेक्स्ट ईयर. दीज आर पब्लिक स्कूल्स. आगे चले. नाउ एक और बात मैंने सोची कि गरीब का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है, बड़े लोगों के बच्चे नहीं पढ़ते. मैंने कहा सरकारी स्कूल को इतना खूबसूरत करो कि बच्चा अपने टूटे हुए घर से आए, वो क्या मैंने इधर ही रखना है. तो उसके बाद मैंने सरकारी स्कूलों को, ये सरकारी स्कूल है, आगे दिखाएं, सरकारी स्कूल आगे दिखाएं, पीछे जस्ट सेकंड, पीछे यस. तो मैंने तमाम स्कूलों की एंट्रेंस, कॉरिडोर्स, मैंने कहा इनको इतना कलरफुल कर दो कि बच्चे अट्रैक्ट हों, दे शुड स्टे देयर, दे शुड एंजॉय. फिर मैंने इनके वॉल्स पे एक्रेलिक बोर्ड्स लगवाए हैं जिसमें मैंने सेलिब्रिटीज की पिक्चर्स, साइंटिस्ट की पिक्चर्स, तमाम जो मौजूद हों उनको दिखाया था कि वो अट्रैक्ट हो जाए. नेक्स्ट. अच्छा जी, 125 स्कूलों को मैं सोलराइज कर रहा हूँ, 40 हो गए हैं, 125 अगले 2-2.5 महीने में हो जाएंगे. फायदा क्या है, हमारा बहुत बड़ा बिल इनके पैसा बिजली के बिलों में जा रहा था सरकारी स्कूलों में, तो अगले 18 महीनों में ये इंशाल्लाह सारे पैसे भी वापस आएंगे और बिजली का बिल भी बचेगा. आगे. अच्छा जी, जब मैं 8 महीने पहले सेक्रेटरी लगा तो मुझे कई स्कूलों ने बताया कि हमारे पिछले 2-3 सालों में बच्चियां ड्रॉप आउट होना शुरू हो गई हैं इस्लामाबाद के सरकारी स्कूलों से भी. मैं कहा क्या हुआ? कहता है जी पेट्रोल की प्राइस बढ़ गई है, रूरल की बच्चियां आ नहीं सकती, वालिदैन ने उनको विड्रॉ करके अपने लोकल लो कास्ट या पुराने स्कूल में डाल दिया है. तो मैंने 50 बसें हमारी ईंटों पर खड़ी थी, या पेट्रोल ना होने की वजह से या ड्राइवर ना होने की वजह से फंक्शनली थी. मैंने उनको रिहेबिलिटेट किया, 200 ड्राइवर और कंडक्टर आउटसोर्स करके हायर किए, पेट्रोल का पैसा मिनिस्ट्री से वहाँ शिफ्ट किया,
20 बसों को 20 रूट्स पे बच्चियों को रूरल एरिया से फ्री उठाते हैं, 8,000 बच्चियां डेली आती हैं और वापस उनका ड्रॉप आउट कम हो गया है। आप शहर में देखी होंगी, these are only for school girls and school teachers, और अगर जगह हो तो मैंने कहा कोई नर्स, टीचर, हाउसवाइफ है उसको भी बिठा लो, खाली नहीं जानी चाहिए। आगे, अच्छा जी, इस्लामाबाद के जितने डिग्री कॉलेजेस थे 1 बजे के बाद फारिग थे, कोई यूटिलाइजेशन नहीं थी। मैंने इनके अंदर हाईटेक आईटी लैब्स बनाई, यू कैन सी, ये आपको ना नस्ट में नजर आएंगी, ना एक ना बैरिया में, ना किसी प्राइवेट पे। ये मैंने ऐसी 70 बनाई हैं, जिसमें 16 ये बनाई, फिर मैंने नस्ट को पकड़ा, GIK, नमल को कहा कि IIT मद्रास का एक करिकुलम है डाटा साइंस AI ब्लॉकचेन का, रन इट इन दीज कॉलेजेस, वी आर पेइंग द कॉस्ट ऑफ दोज इंडिविजुअल स्टूडेंट्स, 6 months के कोर्सेज है, पहला बैच 400 का हो रहा है, अगला बैच इंशाल्लाह एक साल का करेंगे। तो आपने अंडर यूटिलाइज पब्लिक सेक्टर की बिल्डिंग्स को शाम को यूटिलाइज किया है, एंड द किड्स आर बेनिफिटिंग फ्रॉम इट। नेक्स्ट, अब ये बताइए, ये सरकारी IT लैब्स हैं, ये सरकारी स्कूल की IT लैब्स है। हमें इंप्रेशन ये है कि यरकान ज़दा बिल्डिंग है जिसमें सेम है, जिसमें कुर्सियां टूटी हुई। इस्लामाबाद में ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह। बाय नेक्स्ट ईयर तक एवरी स्कूल विल बी लाइक दिस। 100 बना गए, इंशाल्लाह अगले 1.5 साल में और बनाएंगे। आगे, अब मुझे बताइए, इस्लामाबाद की किसी प्राइवेट स्कूल में ऐसी रोबोटिक्स लैब है कि नहीं है? नहीं है, किसी है। ये मैंने 3 में बनाई है, 7 में और बनाऊंगा, और हर लैब को 5 सैटेलाइट स्कूल से कनेक्ट करूंगा इंशाल्लाह। इसमें इसके ट्यूटर्स भी मैंने नस से हायर की है, जो बच्चों को रोबोटिक्स और AI प्राइमरी और मिडिल में पढ़ा रहे हैं। लुक एट द कलरफुल इकोसिस्टम वेयर द किड्स आर लर्निंग। आगे, अच्छा जी, इस्लामाबाद में ये एक बड़ा मसला है, हर कॉलेज के अंदर अबैंडन बिल्डिंग है, अंडर यूटिलाइज बिल्डिंग है। ये मागला कॉलेज का अबैंडन हॉस्टल साहब 15 साल से बच्चियां नहीं रहती थी, मैंने इसको चेंज किया, रेट्रोफिट किया, कलरफुल किया, GIK को दिया, मैंने कहा IT इंस्टीट्यूट रन करो, वहाँ की बच्चियों को भी पढ़ाओ, खुद भी कमाओ और हमारी बच्चियों को फ्री पढ़ाओ। तो ये स्टार्ट हो गया है। इसी तरह से H8 में एक अबैंडन हॉस्टल था, उसको रेट्रोफिट कर दिया है, अगले महीने इंशाल्लाह वो पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिज़ाइन को मिल जाएगा, वहाँ पर एसोसिएट और डिप्लोमा कोर्सेज स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप नई बिल्डिंगों पर अरबों ना खर्च करें, जो एग्जिस्टिंग अंडर यूटिलाइज्ड हैं उनको फुली तरह उनको रिसोर्सफुल करें और उनको यूटिलाइज करें। नेक्स्ट, बताइए किसी प्राइवेट स्कूल में मिले। 5 कॉलेजेस में मैंने सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स बनाए हैं, F6-2, G6-3, F8-4, F10-3 और F7-4। ये फ्री इंटरनेट, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री स्पेसिंग, co-working spaces, solar, the kids can come, the boys can come, the girls can come, they can earn a lot। कॉलेजेस के हमने हॉल्स को अगेन, जो साल में 3 फंक्शनों के लिए यूज़ होता था, एक ईद मिलादुन्नबी के लिए, कश्मीर डे के लिए, एक किसी ग्रेजुएट, तो 362 दिन वो फारिग होता था। तो मैंने कहा हमें इसको 100% यूटिलाइज करना है ताकि बच्चे इसको इंडस्ट्री और वो एकेडेमिया की लिंकेज हो सके। नेक्स्ट, अब इस्लामाबाद के अगेन तमाम प्राइवेट स्कूलों को छोड़ के मुझे बताइए कितने सरकारी स्कूलों के अलावा स्मार्ट क्लासरूम्स आ गए हैं। तो वीडियो एडिट कंटेंट अवेलेबल हो गया, क्लिकर बेस्ड असेसमेंट हो रही है, एंड इट्स एक्सपेंडिंग इंशाल्लाह। बाय एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर एवरी इस्लामाबाद स्कूल विल बी अ डिजिटल स्मार्ट स्कूल। नेक्स्ट, यू कैन सी दीज किड्स आर सो एक्साइटेड। एक तो डिजिटल कंटेंट से एक्साइट होते हैं, बाकी टीचर्स को भी एक सपोर्टिंग टूल मिल गया है टू गाइड स्टूडेंट्स। आगे, फिर हमने गूगल वालों को घेरा, हमने कहा पता नहीं तुम क्या करोगे, पहले हमें तो इस्लामाबाद में मुफ्त में बना के दो। तो इन्होंने ये ICG और ICV पे 2 गूगल रेफरेंस टूल बना दिए हैं। बच्चों को क्रोम बॉक्स फ्री में देकर उनको इंटरनेट सिक्योरिटी के बारे में सिखाया जा रहा है, गूगल क्लासरूम के बारे में सिखाया जा रहा है, गूगल स्किल्स की उनकी डिजिटल IDs बनाई जा रही है, एंड दिस इज नाउ एक्सपेंडिंग इन अदर स्कूल्स आल्सो। नेक्स्ट, अच्छा जी, फिर हमने कहा टीचर्स की शॉर्टेज है। पाकिस्तान में टीचर रिक्रूट करना दुनिया का सबसे बड़ा मुश्किल काम है। सर्विस कमीशन 2.5 से 3 साल लेता है, प्रोविंशियल कमीशन 2 से 2.5 साल लेता है। तो हमने ये थर्ड पार्टी हायरिंग की टीच फॉर पाकिस्तान से, 120 एजुकेशन फेलोज, जिसमें लाम्स, नास्ट, ज़ैबिस्ट, बहुत सारे ब्रिलियंट बच्चे थे, पढ़ाई कराना चाहते थे, तो उनको 2-2 सालों के लिए हायर किया है, तमाम को रूरल स्कूल्स में डिप्लॉय किया है, और बच्चों का लर्निंग लेवल बहुत गैप कम हो गया उससे। नेक्स्ट, ये अगले महीने इंशाल्लाह आ जाएगा कि मैं 150 अगेन आउटसोर्सिंग करके टेक फेलोज लूंगा, जो बच्चों को एंटरप्रेन्योरशिप, स्टीम और कंप्यूटर एजुकेशन पढ़ाएंगे मिडिल और हाई स्कूल के स्टूडेंट को। ये भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करेंगे। नेक्स्ट, ये मैंने 150 प्राइमरी स्कूलों में कोडिंग और AI की ट्रेनिंग शुरू करा दी है। करिकुलम हमने खुद बनाया टेक्नोलॉजी कंपनीज के साथ मिलकर, और ये नस्ट ने ये विन की, तो नस्ट के कंप्यूटर इंजीनियर और सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स इस वक्त AI और कोडिंग पढ़ा रहे हैं। आगे, फिर ये जी स्कूलों के अंदर मैंने माइंड गेम्स रूम स्टैब्लिश करना शुरू किया ताकि बच्चों को स्क्रैबल एंड चेस
ये सिखाई जा सके ताकि उनकी कोग्निटिव डेवलपमेंट हो, वो थोड़ी माइंड शार्पन हो और वो अपने आप को स्ट्रैटेजी के तौर पे स्ट्रैटेजी को लर्न कर सके। तो आपको प्राइमरी और मिडिल के बच्चे अब स्कूलों में स्क्रैबल और ये गेम्स इस तरह के, और इनको प्रॉपरली साइंटिफिक तरीके से पढ़ाया जा रहा है। आगे चले, यू कैन सी द किड्स आर सो हैप्पी। हमने इनके माइंड गेम रूम्स को भी खूबसूरत किया ताकि वहां बैठ के वो एंजॉय कर सके। आगे, अच्छा जी, ये भी हमने शुरू किया पॉडकास्ट रूम। पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स आर एज नेसेसरी इन योर कैरियर ग्रोथ एज एनीथिंग एल्स। तो हमने पॉडकास्ट रूम बनाए हैं, बच्चे इंटरव्यूज लेते हैं टीचर्स के, गेस्ट के, अपने अपने यूट्यूब चैनल बना रहे हैं, डिफरेंट टॉपिक्स पे डिस्कशन करते हैं, उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है। ये हमने तकरीबन 20 स्कूलों में कर दिया और इसको आगे भी एक्सपेंड करें। दे आर डॉक्यूमेंटिंग इट, अपना यूट्यूब चैनल भी बनाते हैं। पॉजिटिव सरगर्मी है, बच्चों की कम्युनिकेशन स्किल्स भी इंप्रूव हो रही है। नेक्स्ट, स्कूलों में जिम बनाने शुरू कर दिया, आउटडोर जिम भी बना रहे हैं, इंडोर जिम भी बना रहे हैं, ताकि बच्चियों को, क्योंकि अफोर्डेबिलिटी का इशू है, वो बाहर नहीं कर सकेंगे, यहाँ वो इंशाल्लाह कर रहे हैं। आगे, ये देखिए इंटरनल जिम भी बन गए और एक्सटर्नल जिम भी बन गए। आगे, अच्छा जी, इस्लामाबाद में सरकारी स्कूलों में फॉरेन लैंग्वेजेस स्टार्ट करा दी हैं। नमल के साथ एग्रीमेंट किया है, जापानीज, जर्मन, कोरियन, अरबिक, चाइनीज स्टार्ट कराई है। पहला बैच 1000 का ट्रेन हो रहा है, इंशाल्लाह अगला बैच 2000 का होगा। तो 6 मंथ्स का कोर्स ये भी उनके लिए स्टार्ट करा दिया है। आगे चले, अच्छा जी, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए फाइनेंशियल लिटरेसी का आना बड़ा जरूरी है। यू मस्ट नो हाउ टू सेव मनी, यू मस्ट नो हाउ टू इन्वेस्ट मनी, यू मस्ट नो हाउ टू यूज ऑनलाइन बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट्स, यू मस्ट नो हाउ टू यूज अ डिजिटल ऐप, यू मस्ट नो हाउ टू एन ओपन अकाउंट। ये हम इंशाल्लाह 5वीं से बच्चे से लेके FSC के बच्चे तक को पढ़ाना शुरू कर दिया है। टीचर्स को ट्रेन कर दिया है, करिकुलम स्टेट बैंक से डिजाइन किया है, ग्राउंड पे आ गया है। वी आर डूइंग इन इस्लामाबाद, प्राइवेट सेक्टर पीछे है, हम आगे हैं। आगे चले, आज ये भी टीचर सारे ट्रेन हुए हैं और इसकी जो करिकुलम है हमने इसको स्टोरी टेलिंग की तरह किया है। बुक का नाम है हाउ टू डू अ पोमीग्रेनेट बिजनेस। उस बुक को पढ़ते पढ़ते वो ये सारे फाइनेंशियल लिटरेसी के टूल्स सीख जाएंगे। अच्छा जी, ये कंटेंट बन रहा है एनवायरमेंटल लिटरेसी का और एंटरप्रेन्योरशिप का, ये हमने कॉन्ट्रैक्ट आउट किया है। इंशाल्लाह अगले 2-3 महीने में ये भी बन जाएगा और इसको भी हम स्कूलों में रोल आउट करेंगे। आगे, अच्छा, पहली दफा स्कूलों में मैंने टेलीस्कोप्स लगाई हैं कंप्यूटराइज्ड, ताकि बच्चों को दे शुड लुक अपवर्ड्स, दुनिया को देखें, एस्ट्रोफिजिक्स। अब जाके बच्चों को हमने स्पेस वीक बनाया, दे हैव स्टार्टेड यूजिंग टेलीस्कोप्स, दे हैव स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग व्हाट स्पेस एक्स इज, व्हाट हबल टेलीस्कोप इज, व्हाट जेम्स वेब है, और थोड़ी साइंस की तरफ फ्रंटियर्स ऑफ यूनिवर्स के बारे में उनको पता चलना शुरू किया है कि द स्काई इज नो मोर द लिमिट, दे कैन अंडरस्टैंड मोर थिंग्स अबाउट द वर्ल्ड देन अस बट वी डू इन आवर लाइफ। ये फिर हमने एजुकेशन इन्फॉर्मेशन फेयर किए इस्लामाबाद में, तमाम जितनी मेजर यूनिवर्सिटीज़ को मैं सरकारी स्कूलों में ले गया हूँ। मैं कहा बताओ बच्चों को कि डाइवर्सिफिकेशन इन कैरियर क्या है, बताओ कि इंजीनियरिंग और मेडिसिन के अलावा और क्या चीज़ है। तो तकरीबन हमने 5 से 10 हज़ार स्टूडेंट्स 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के उनको एंगेज किया। नेक्स्ट स्लाइड पे दिखा दे। तो ये बड़े कॉन्स्टेंट सेशंस हो रहे हैं, बच्चों को गाइड किया जा रहा है कि ज़िंदगी में तुम्हारा क्लर्क बनना मकसद नहीं है, यू कैन राइज टू द टॉप, जस्ट अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटीज़ क्या है, उनकी एंट्रेंस की रिक्वायरमेंट्स क्या है, हाउ टू ड्रीम बिग। आगे, फिर वी हैड अ समर कैंप, हमने इतना बड़ा समर कैंप लगाया जिसमें मैंने तमाम चीजें, फ्रॉम टेक बूट कैंप्स टू मोबाइल ऐप डेवलपमेंट टू ग्राफिक डिजाइन, एस्ट्रोनॉमी, यू थिंक ऑफ एनीथिंग, इट वाज देयर। We brought individual motivational speakers from Supreme Court judge to social activists to IGs to army, everybody was there, the bankers, the chartered accountant. फायदा उसका क्या हुआ, हमने ओपन अप किया था प्राइवेट सेक्टर के स्कूलों से कि आप भी आए देखें। अभी लेटेस्ट डाटा मैं आपको बताता हूँ, 16 मॉडल कॉलेजेस में 5-5.5 हज़ार बच्चे प्राइवेट सेक्टर से शिफ्ट हुए हैं टू द पब्लिक सेक्टर कॉलेजेस। एंड मैंने तमाम स्कूलों को कहा उनकी लिस्ट पे डिस्प्ले करो और बताओ किस स्कूल से आए। हम नहीं बताएंगे, वो खुद बताएंगे, और बच्चों के टेस्टिमोनियल्स बताओ। वो कहते हैं खाना आपके यहाँ फ्री, किताबें आपके यहाँ फ्री, लैब्स आपकी अच्छी, गेम्स आपकी अच्छी, स्पोर्ट्स आपकी अच्छी, फॉरेन लैंग्वेजेस आप पढ़ा रहे हैं, टेक्निकल ट्रेनिंग आप करा रहे हैं, समर कैंप्स आप करा रहे हैं। मेरा बाप कर्जा लेके प्राइवेट में क्यों पढ़ाए, ट्यूशन तो फिर भी उसने पढ़नी है, हम सरकारी में क्यों ना लाएं। नेक्स्ट, नाउ वी हैड अ मैग्निफिसेंट गर्ल्स स्पोर्ट्स कार्निवल, तकरीबन 15,000 बच्चियों ने पार्टिसिपेट किया। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 3 दिन किया, पूरे पाकिस्तान से बच्चियां आई। दे वर सो एक्साइटेड, 90% पब्लिक स्कूल की बच्चियां थी, सो दैट दे गॉट द कॉन्फिडेंस कि वी द स्टेट कैन पैटर्नाइज अस, द स्टेट कैन सपोर्ट अस। नेक्स्ट, अच्छा जी, मैंने तमाम कॉलेजेस की ड्यूटी लगाई है और तमाम यूनिवर्सिटियों को कहा है कि आप एक्सेस दें सरकारी स्कूल के बच्चों को, उनके कैंपस टूर विजिट्स कराएं, फ्रॉम लाम्स टू नास टू NCA टू PFID टू फास्ट टू कॉमसेट। अब ये बच्चे वीकेंड्स पे जाते हैं,
दे मूव अराउंड डिफरेंट स्कूल फैकल्टीज के लेक्चर्स होते हैं, उनको थोड़ी एक्साइटमेंट होती है. मैंने कहा इनको भी तो बत्तियां दिखाएं, इनको तो आप गेट नहीं क्रॉस करने देते. दे शुड गो इनसाइड, दे शुड मूव अराउंड. आप फैकल्टी के मेंबर्स से मिलाएं, बच्चों की एक्साइटमेंट जनरेट करें कि फ्यूचर में आप क्या बन सकते हैं. तीसरा काम किया कि मैंने सेक्रेटरी का सारा इख्तियार प्रिंसिपल्स को दे दिया, पावर्स अपनी डेलीगेट कर दी है. मेरे पास कोई फाइल नहीं आती. वी ट्रस्ट आवर प्रिंसिपल्स बिकॉज फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स वो हैं. दे आर डूइंग गुड जॉब, वी हैव टू ट्रस्ट देम, पुट फेथ इन देम, एंड दे आर नॉट डिलीवरिंग एक्सीलेंट वर्क. आगे अच्छा जी, रिक्रूटमेंट सबसे बड़ा मसला है पाकिस्तान का. रिक्रूटमेंट से सब डरते हैं. मेरी भी जान खाई हुई थी सारे पाकिस्तान ने. मतलब कोई ऐसी सिफारिश नहीं थी जो मेरे गले नहीं पड़ी. हमने क्या किया, 45,000 लोगों का टेस्ट लिया, स्कैन किया, एआई सॉफ्टवेयर लिया, उससे रन किया, ऑटोमेटेड रिजल्ट आया, ईमेल ऑटोमेटेड जनरेट हुई. एक वैकेंसी के अगेंस्ट 5 बंदों के इंटरव्यूज हुए, बंदों को ज्वाइन भी करा दिया. सिफारिशें करने वाले मुझे ढूंढते रह गए और रिजल्ट आ गया. कोई भी कोर्ट में नहीं गया, कुछ भी नहीं हुआ. आगे ये एक और बात है, सरकार से मैंने कोई एडिशनल सप्लीमेंट्री ग्रांट नहीं ली, लेकिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया. पहले काम करें फिर लोग सपोर्ट करते हैं. तो ये वो CSR की सपोर्ट है जो मुझे मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन से मिली, जिसकी वजह से मैं ये जो इतना एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने में कामयाब हुआ हूँ, ये उस CSR सपोर्ट से हुआ है. आगे तो सस्टेनेबल कैसे होगा, यही फार्मूला आपने पूरे पाकिस्तान, यही मैंने गिलगित में अपनाया था, यही इस्लामाबाद में, यही पूरे पाकिस्तान में अपनाना चाहते हैं. स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, मेरे अलावा किसी और को सिलेक्ट कर ले, जिसको सिलेक्ट करे फिर उसको 3 साल दे कि यार तुम परफॉर्म करो, और मुझे परफॉर्मेंस पे फायर करे, सियासत पे फायर ना करें. देखिए मैं किसी को खुश नहीं कर सका, किसी को अगर मैं डिलीवर नहीं करता, आपने उसको नहीं कर सकता, मुझे हटा दे, लेकिन डिलीवरी के अगेंस्ट करे. दूसरा पीछे पीछे पॉलिटिकल ओनरशिप होनी चाहिए. ये तकरीर मुझे नहीं करनी चाहिए, ये यहाँ के पार्लियामेंटेरियंस को करनी चाहिए, बिकॉज उनकी ओनरशिप होगी तो रिसोर्स एलोकेशन ज्यादा होगी. तीसरा ये है कि एजुकेशन हैज टू बी पार्ट ऑफ नेशनल नैरेटिव. आपका पूरा शाम को 5 बजे से लेकर 12 बजे तक नेशनल मीडिया हर बात करता है सिवाय एजुकेशन के, हर यूट्यूबर हर तकरीर करता है सिवाय एजुकेशन के, कोर्ट में बंदा हर चीजें लेकर जाता है सिवाय एजुकेशन के, हर बंदा अपने मफाद की बात करता है सिवाय एजुकेशन की, क्योंकि 90% एजुकेशन गरीब का मसला है, इसलिए उसकी बात कोई नहीं होती. जब तक ये नेशनल नैरेटिव का पार्ट नहीं बनेगा, इस पे एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं होगी, एफिशिएंसी और इंटेग्रिटी नहीं आएगी. पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करनी पड़ेगी. वी हैव टू बिल्ड. अब ये अकेले स्टेट का काम नहीं है, प्राइवेट सेक्टर भी आएगा, नॉन प्रॉफिट सेक्टर भी आएगा, नॉन गवर्नमेंटल सेक्टर, सारे आएंगे तो मिलकर काम करेंगे. और तीसरी बात यह है कि हायर एजुकेशन इज अ प्रिविलेज, इट्स नॉट अ राइट. हायर एजुकेशन में बेस्ट ऑफ द बेस्ट, क्रेम डे ला क्रेम जाएं. जो नंबर कैटेगरी 2 का ग्राउंड है उसको स्किल डेवलपमेंट पे जाना चाहिए, लेकिन अभी भी 70% ऑफ यूथ इज स्टक इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी. हमें उस पर फोकस करना है. अगर उधर क्वालिटी एनहांसमेंट नहीं हुई तो यही फीडिंग कार्डर क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज करके आपको हायर एजुकेशन में जीरो डिलीवरी देगा. तो वी हैव टू मेक दिस सिस्टम ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी आउटस्टैंडिंग. एंड लास्टली एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में वी हैव टू मेक अ ट्रांजिशन फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर टू टेक्नोलॉजी. नई बिल्डिंगें बनाने बंद कर दें, टेक्नोलॉजी की इक्विपमेंट को एम्बेड करें, कनेक्टिविटी बढ़ाएं, एंड यू विल सी मैजिकल रिजल्ट्स. अगेन दिस वॉज माई स्मॉल स्टोरी, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप इसका एम्बेसडर बने, इसको चैंपियन करें और इस मौजूद को लेके आगे बढ़े. सूबों को भी ये अडॉप्ट करना चाहिए और प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर को मिलकर काम करना चाहिए. अगेन थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच. मैं वानी साहब से कह रही थी कि गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में चीज़ें जानी चाहिए, बट ऑल्सो टू नो दैट व्हेन यू हैव एक्स नंबर ऑफ स्कूल्स एंड यू कैन डू समथिंग एंड देयर इज अ विल, you have not even, what I mean, not even a day, but not even a minute to lose. And that's been a breathless journey by Vani Saab. I think lots for people to emulate. बहुत सारे secretaries और सूबे इसको देख रहे हैं और बहुत सारे कोशिश कर रहे हैं कि इसको हम आगे कैसे लेकर जाएं. Our issue is not that there's an education emergency. The child is in crisis in this country with massive amount of stunting, not having full immunization, birth registration, many other challenges, including multidimensional poverty, etc. in Pakistan. So, you know, we need to really shake up the system. But what else is the actionable point? Sadly, we do not have too much time, but Shahid Saab, what would you add? Ke actionable cheezein kya honi chahiye to sustain these kind of amazing efforts or 360-degree efforts, as Vani Saab says, or 360-degree transformation in education? I think before I say something, I must congratulate Vani Saab. I know Vani Saab before he became a secretary, and the wonderful work he did in Gilgit, and the kind of amazing things you have done, I think all of us must appreciate,
because we as a nation are very stingy in appreciating good things. And yeah, but having said that, I think that this is a kind of ivory tower he has created in federal. And since education is a provincial matter, what is happening there? I think that is what matters. And Pakistan's one major issue is scaling up, because doing things in small, spheres, you can do things, and we can, like, there are some very good educational institutions in Pakistan, but the moment we scale up things, so I wonder that when we take this to our provinces, what will happen to these initiatives? What I see in the future, the century we have already entered, 21st century, it is a highly competitive century, and where there is no room for mediocrity. And the kind of skills, I must appreciate the speech Arshad Sahab gave in the inaugural session. I think that is one wonderful speech that talks about some major issues of education. And 21st century, there is a very good book by Harari, 21 Lessons for the 21st Century, where he talks about the set of skills we require in 21st century, including AI, critical thinking, creativity, collaboration, communication, and adaptability. So my, concern is, are we producing our students who are we producing critical thinkers? In most of the schools are not. That is one thing that if we want to cope with the challenges of 21st century, AI is a must. And when we say AI, it's not in the air. We have to, look at use of AI at different levels. A, our curriculum. B, our syllabus. C, Arshad Sahab referred to that, is teaching materials. Gone are the days when we were only confined to printed teaching materials. There is a lot on, online and PDF, books in PDF. Similarly, we need to integrate our pedagogy with latest technology. Also, we need to revamp our existing assessment system. So all these challenges are there. But Wani Sahab has set up one very good example, and the rest of us should, I think, try to follow that. But all these problems are very serious, like 26 million children out of school, 38% dropout rate, and the relevance, what is actually happening in the classroom, that is another very important thing. For that, I think what the state needs to do is, number one, we must enhance our allocation for education, and 4% is the standard threshold level suggested by international organizations, and we are at 1.5%. When we talk about this, people talk about inmet capacity nahi hai. I think it's not either or question. We need to, work for the capacity building as well as enhancing the funds. I think these two are very important things. We have been promising in education policies in the past as well, but we haven't done anything. As far as my final point is that, as Bela said, we have seen these education emergencies declarations in the past as well. So we are actually waiting. This declaration came, I think, 6 months before, 5 months before? May, it was declared education emergency. We haven't seen anything, any step, as far as education emergency is concerned. The first meeting was in May, and it was, decided that within 15 days, people will be doing their work, but we haven't. So I think my wish is, my prayer is, that this time we are very serious about our promises. Thank you. Shukriya bahut. Just to remind that I think about after 2 weeks or 10 days of that emergency,
17 action point notification was given. It wasn't a notification, many people started work on it. I think Balochistan has already created its roadmap. Sindh is just creating its roadmap and should be out in December on how to address the issue of out-of-school children, not just as an access issue, but as a quality issue. On nutrition, I think we are happy to see that Punjab has already started a big nutrition program. KP has started a nutrition program. But of course, the proof lies in whether the pudding is going somewhere or not, and how sweet is it going to be at the end of it. So I think there is an urgency, but it is everybody's urgency. The issue of climate change is not about Sarkar only, it is about all of us. How do we all come to the table? And I think it's very important to see what we can do, this public-private partnership and industry partnerships. And I'm coming to you, Arshad Saab, in terms of actionable steps. The point is that we need to see the industry and education clusters go hand in hand. Ye CPEC ho, Falah ho, Dimka ho, this all has to happen. The industry has to rise to its feet, as it is doing under the Global Business Coalition for Education in US and other places. Industry ko log chahiye, और अगर लोग ठीक नहीं होंगे तो कैसे इंडस्ट्री चलेगी? So it's time that the industry also woke up, and I'd love to hear from you in the next 2 minutes as to what is OUP's next plan, next business plan to see coming together for the emergency. Thank you, Bela. सबसे पहले तो I would like to congratulate Vani Saab for the tremendous initiative that he's taken. इन्होंने एक इंक्यूबेट करके एक मॉडल दिया है सूबों को जिसको सूबे स्केल अप कर सकते हैं. तो आई थिंक दैट इज़ एन एक्सीलेंट इनिशिएटिव. एंड एक और चीज़ जो वानी साहब ने बात की was around public-private partnership. So yes, there is a lot that needs to be done, but private sector can play an integral role in cascading all the initiatives that the government has taken around improving the quality of education, improving access to education. और इस हवाले से OUP is developing content for all categories of students, चाहे वो students public sector में के schools में हैं या वो प्राइवेट सेक्टर में हैं या वो इंटरनेशनल बैकलोरिया की तरफ जा रहे हैं या वो IGCSE और A levels की तरफ जा रहे हैं. हर तरह के स्कूल्स के लिए, हर तरह की ऑडियंस के लिए we are developing content that is current, that is based on the latest pedagogical developments taking place in the world. मसला क्या है जी? मसला है एक जब नेशनल करिकुलम ऑफ पाकिस्तान आया तो उसके साथ एक रिक्वायरमेंट आई कि हर पब्लिशर को हर किताब को NOC लेना है. Now, because education is a provincial subject, that means that one textbook needs to go to 4 provinces, Azad Jammu and Kashmir, Gilgit-Baltistan, as well as the federal government. तो रफली ये हमारे 6 रेगुलेटरी बॉडीज से एक किताब को रिव्यू कराया जाता है और उसका इम्पैक्ट ये है कि हर रिव्यू में देयर इज़ अ रिव्यूअर फी. तो टू गेट एन NOC to publish a textbook for school in Pakistan, it costs you only in regulatory fees about 6.5 लाख रुपया. अब ये पब्लिशर ने कॉस्ट कहाँ से रिकवर करनी है? उसने किताब की कीमत बढ़ा देनी है. तो एक चीज़ जो एजुकेशन इमरजेंसी में हमें एड्रेस करने की ज़रूरत है is to simplify the review process. Now, yes, education is a devolved subject, but we have one curriculum. आपका national curriculum है, हर सूबे को उसमें जब रिव्यू करने में, और वो जो रिव्यूज़ भी कर रहे हैं उसमें वो कोई सब्सटेंटिव चीज़ें नहीं कर रहे. दे आर जस्ट एडिंग और कि जी आप इस बच्चे को कपड़े मुख्तलिफ पहना दें,
اس لڑکی کو کے سر پہ دوپٹہ ڈال دیں. That is not going to change the quality of content. So I think there is an urgent need that we simplify the review process. اور دنیا بھر میں جب ریویوز ہوتے ہیں تو ایک سیلف اسیسمنٹ ہوتی ہے کہ آپ فارمز بنائیں کہ پبلشر شوڈ سرٹیفائی, سبمٹ این NOC اسٹیٹنگ کہ جی ہماری کتاب میں یہ کریکولم ہے, یہ تمام چیزیں اس میں فلفل کی گئی ہیں, یہ اس میں اس طرح ہم نے ان ٹاپکس کو ایڈریس کیا ہے, اور ہم ایک ایفیڈیوٹ دیں یا انڈرٹیکنگ دیں کہ وی ٹیک رسپانسبلٹی فار دا کوالٹی آف کانٹینٹ دیٹ از پرووائڈیڈ. اس سے آپ کا پروسیس سمپلیفائی ہوگا. اس وقت ہر ریگولیٹری اتھارٹی کے پاس تھاؤزنڈز آف ٹیکسٹ بکس پائپ لائن میں ہیں جو ریویو ہونی ہے, جن پہ NOCs ایشو ہونے ہیں. تو دیٹ از واٹ از کازنگ ڈیلیز ان اویلیبلٹی آف کوالٹی ٹیکسٹ بکس ٹو اسکولس, and not just private schools but also to public schools. دوسری بات یہ کہ how can we reduce the price of the books? The future there is blended. You reduce the extent of the printed book and provide content digitally. اس میں آپ lessons, آپ sample exercises, یہ تمام چیزیں ہم QR کوڈز کے ساتھ پرووائڈ کر سکتے ہیں تاکہ کتاب کا ایکسٹینٹ کم ہو, اسکول بیگ کا وزن کم ہو, جو ایک بڑا میجر چیلنج ہے اسپیشلی فار پرائمری اسکول چلڈرن, دا ویٹ آف دا اسکول بیگ دیٹ دے ہیو ٹو کیری ٹو اسکول, اس کو بھی کم کرنے کے بہت سارے انیشیٹیوز لیے جا سکتے ہیں. بٹ وی مسٹ اسٹریم لائن آر ریگولیٹری پروسیس. ایک اور چیز میری ون فائنل تھنگ, OUP نے ایک ہم نے ایک اسینشیل سیریز تیار کی ہے which is extremely affordable, and we would like to partner with the government to take that series forward in public sector schools, kyunki our children in public sector schools also deserve quality content and quality education. So isme we would like to, this is our gift to the nation, so that we can bring these books to the masses. تو وی ووڈ لائک کہ ہم جو ریگولیٹری اپروول کا پروسیس ہے اس کو اسٹریم لائن کریں, اور جو ہمارا ٹینڈرنگ کا سلسلہ ہے اس کو اس میں بھی ٹرانسپیرنسی لائیں اور ایکوٹی لائیں تاکہ اس میں اچھے کوالٹی پبلشرز بھی پارٹیسپیٹ کر سکیں. تھینک یو. شکریہ. ٹائم تو اوور ہو گیا ہے, مگر میں چاہتی تھی کہ کم از کم, کیونکہ ہم نے کوئی 8 منٹ دیر میں شروع کیا تھا, کہ اگر کوئی ایک برننگ سوال ہو ہم کوئی لے لیں, اگر if there is anything, but only a question please. Okay, I see that lady right at the top. اگر اس کے پاس چلے جائیں تو بہت important ہے, and just so that at least we have a voice from the audience. We've had a very rich discussion, and it will be followed on with a very exciting another panel which will going to be on teacher education. Remember, education is all about teams. It's about teachers, students, parents, other members of society who step forward. Education is not a lonely pursuit, and certainly overcoming the emergency is not going to be a one-person act. جی بتائیے اپنا سوال, اپنا نام بتائیے اور اپنا سوال. Assalamualaikum. My name is Zahida. I'm actually working for FD. I'm a lecturer in Margla College, and I teach psychology. My concern is that I've been noticing mental health issues in my students, and we have not added that to our agenda. So are we going to do anything about that? Mental health problems, sir. Okay, mental, بالکل, I totally agree with you. Mental health میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں, prior to this assignment جب میں گلگت بلتستان میں تھا تو وہاں 250 بچے بچیاں ہر سال سوسائڈ کمٹ کرتے ہیں کالجز میں. So we invited Aga Khan Health Services and we developed a Taskeen helpline جو 6 لینگویجز میں ہوتی تھی, جس کو اب میں اسلام آباد میں بھی لایا ہوں, جو بچوں کو دن میں کاؤنسلنگ کے لیے ایکسیس دے گی. اس کے علاوہ سائیکالوجسٹ کی ٹریننگ کا بھی ہم ایک پروگرام بنا رہے ہیں, اور ایک مینٹل ہیلتھ کی ٹاسک فورس بھی اسلام آباد میں بن جائے گی انشاءاللہ, جس میں ان بچوں کی پری کلینکل ڈسپوزیشن والی ایشوز, ہاؤ ٹو گائڈ دیم, ٹیچرز کے بھی, اٹس ناٹ اباؤٹ اسٹوڈنٹس, اباؤٹ ٹیچرز, دیئر سبلنگ. سو وی آر ورکنگ آن اٹ, اینڈ انشاءاللہ تھینک یو فار پوائنٹنگ اٹ آؤٹ. Absolutely a brilliant question to end on,
But I do want to ask Wani Saab, as I take the privilege of being a moderator, that I think what we need to do, Wani Saab, is also open the digital mental health possibilities. Because जैसे हमारे पास digital health की बड़े अच्छे apps जैसे सेहत कहानी वगैरह ये सब आए हैं, we need to be able to have mental health solutions also, which is just an app away or a phone call away. So, brilliant question. So glad that I could have one question, and it was really a silver lining, because this is going to be also addressing the issue of the holistic education emergency in which we are involved. And one ishtihar I want to do, कि one of this vision was, मेरी उस्ताद प्रोफेसर अनीता गुलाम अली थी, और वो हमेशा कहती थी, बेला वो कौन सा दिन आएगा जब लोग आम स्कूल प्राइवेट स्कूल से उठ के सरकार में आएंगे. वानी साहब ने एक शक्ल दिखाई, और जो ख़ास बात है कि इस बार हमारा जो पाकिस्तान लर्निंग फेस्टिवल, एंड वी मूविंग फास्ट टुवर्ड्स our 100th festival when we started in 2011. This is being hosted by the government and the ministry, but it will be hosted at the Islamabad Model College for Boys in G62, जहाँ से वानी साहब खुद पढ़े हुए हैं. और I think that's what we want to showcase. I would like to add to it, एक तो मैंने इनको कहा था कि मिनिस्ट्री में कि आइंदा मैं किसी सेरेना और मैरियट के फंक्शन को मैं अटेंड नहीं करूंगा. एजुकेशन का कोई फंक्शन होगा मेरे कॉलेज में होगा, बात है. हॉल मैं फ्री में दूंगा, ऑडियंस मैं फ्री में दूंगा. मैं वो करोड़ों रुपए अगर आपको बहुत खर्च करने हैं तो मेरे स्कूलों पे खर्च करें. तो बात ये है कि वो मैंने कॉलेज मैडम को कहा, ICB G63 आपको तमाम एक्सेस देंगे, अशर्स भी देंगे, सब कुछ देंगे, उनके प्रिंसिपल भी यहाँ बैठे, ताकि वो एक तो उसका मैं ये आइडिया कहाँ से है, असल बात आइडिया की है. 1.5 साल पहले प्राइम मिनिस्टर ने आना था गिलगित, तो मुझे कहा गया उनका अरेंजमेंट करें, ये करें वो करें. तो मैंने कहा कहाँ करें, उन्होंने कहा जी सेरेना में करें. मैं कहा सेरेना की कॉस्ट कितनी, उन्होंने 30 लाख का बिल दे दिया. मैं कहा मैं 1 रुपया नहीं खर्च करता. मैंने डिग्री कॉलेज गर्ल्स का लिया, उसको रेनोवेट किया, 30 लाख में प्राइम मिनिस्टर का फंक्शन वहाँ करा दिया. तो बात यह है कि वो पैसे अपने स्कूलों में क्यों ना लगाएं जो हम बड़े बड़े उसमें खर्च करते हैं. 15 से 17 नवंबर को है, नेक्स्ट वीकेंड. आप लोग सब आइए अपने बच्चों को. और अच्छी बात है कि ये पहले एज ग्रुप 3 to 16 था, अब 17 to 24 भी है. So we opened it up so that more people can come, take ideas and run with them. And it's going to be an amazing festival with so many events, and actually more than that, tons of learning to take away from it. And it'll boost the confidence of the students, the teachers, the parents to see कि ये भी हो सकता है. So you're all invited. It's free entry, and it is being done, and it is be a regular annual event of the ministry. And we are very proud of the fact कि हम लोग सब मिलके इसको करेंगे. So please आप आइएगा और देखिएगा कि गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर के एक कॉलेज की, एक स्कूल की क्या शान और शौकत है, and how it is multiplied because we are holding a learning festival where there'll be so many ideas. And thank you to the principal and the HM who is hosting this over there, and all doors will be open. But it is a truly learning festival which addresses issues of both academic and non-academic skills, of relevance of 21st century, and most of all of being together, all of us, in addressing the education and the education emergency and the learning crisis. बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, Oxford University Press and the eminent panel over here.